Okay. So 9C will give you another important function. So this is the fourth arithmetic function which we'll be studying, right? So first हमने पढ़ा था integral function, then we had studied tau, then we have studied sigma, right? Then the next function is mu, about mu, right? So this function is known as Mobius function. So उससे next exercise में इसकी help से हम Mobius inversion formula बनाएंगे, which is very important from examination point of view, right? So okay. So definition wise, what is Mobius function? Right, so what this function says, so basically this function is a mapping from set of natural numbers to -1, 0, 1, right? So basically इस function की domain, so if you see this is the domain, domain means input. So ये जो input लेता है ये it takes natural numbers, और जो answer आएंगे वो तीन ही आएंगे, या -1 या 0 या 1. How this will happen? So you see mu of any n will be 1 if n is 1. So अगर आपका natural number 1 है, then the answer will be 1, right? If the natural number is divisible by any prime square, you see 16 is divisible by 4, so 4 is nothing but 2 square. Then 27 is divisible by 9, and 9 is nothing but 3 square. Then you see any prime, you see if I have any number, so 2 square, 3 to the power 5. So you see this number is divisible by 2 square, so this is say n, so 2 square divides n. Even 3 square divides n. So अगर किसी number को prime का square divide करता है, then its Mobius function is 0. Is it clear बच्चे? Yes, ma'am. अब देखो n 1 हो गया, अगर n को p square, so n को p square डिवाइड करता है, इसका मतलब अगर किसी भी प्राइम की पावर, so you see say n is this, say n is this, say n is p1 alpha 1 and p2 alpha 2 and so on. तो ये देखो अगर कोई भी कोई भी अल्फा आई 2 से बड़ा हो गया तो उसका मोबियस फंक्शन विल बी 0. सो इसका मतलब क्या हुआ? only option which is now left is what? n is the product of the distinct primes, और सबकी पावर 1 है, p1 p2 pr. so in that case mu of n will be -1 to the power r. so here r is what? r वो number of primes है जो n की prime factorization में आते हैं. बेटा clear है? So this is the definition of Mobius function. So Mobius function is a mapping from natural numbers to -1, 0, 1, means इसके तीन ही आंसर्स आएंगे. 0 कब आएगा? अगर जो मेरा नंबर है n वो किसी प्राइम्स के स्क्वायर से डिविजिबल है. 1 कब आएगा? जब n is 1. and -1 to the power r कब आएगा? अगर n is product of distinct primes p1 p2 pr, right? So you see, so by this definition what will be mu of 1? So mu of 1 will be 1. Then what will be mu of 2? अब देखो 2 प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आता है, एंड यू सी इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम, पावर भी 1 है. सो इसका मतलब कितने प्राइम्स है 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन में? 1. सो -1 टू द पावर 1. सो -1 टू द पावर 1 कितना हो गया? -1. बेटा क्लियर है? Yes, ma'am. So same, this will be mu of 3 because this is only one prime in the prime factorization. What will be mu of 4? See 4 is what? 2 square, yes. So 2 square divides 4, so this is 0. What will be mu of 5? What will be mu of 5? Again एक ही prime है, so this will be -1. -1 to the power 1, so it's 1. Again mu of 6 कितना हो जाएगा बेटा? देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 3 प्राइम फैक्टराइजेशन. तो अगर आप देखो दोनों प्राइम्स की पावर 1 1 है, तो इसका मतलब ये लास्ट वाला केस बन गया.
सो -1 और पावर कितनी हो जाएगी, कितने प्राइम्स हैं इसमें, 2. 2, सो -1 to the power 2, सो -1 to the power 2 का मतलब कितना हो गया, 1. 1. Then what will be mu of 7? Again -1 per 1. -1. Yes. What will be mu of 8? What will mu of 0. 8? Yes, mu of 8 will be 0 because 2 square divides 8. So similarly, so now we know how to calculate the mu for any given function number. Now the next property, if you see article 7 says, show that mu is a multiplicative function. So अभी तक हमने जितने भी functions किए थे हमने देखा है कि वो सारे multiplicative functions हैं. So what we have to prove? So we have to prove अगर a and b are numbers such that GCD of a and b is 1. So we have to prove multiplicative का क्या था, mu of ab. So mu of their product is what? Mu of a into mu of b. So proof wise it's very easy. Same. पहला केस क्या हो सकता है, अगर a और b दोनों 1 हो गए, if a is equal to b is equal to 1, तो obviously in this case product कितना हो जाएगा, ab भी 1 हो जाएगा. So therefore mu of ab will be mu of 1, और mu of 1 कितना होता है, what is mu of 1? 1. So you see again 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 into 1. So you see this 1 is what, mu of 1, mu of 1, and हमने a को भी 1 लिया था, हमने b को भी 1 लिया था. So you see mu of ab is equal to mu of a into mu of b. अब let us take another case. One of them is 1, b is not equal to 1. So in this case ab कितना हो जाएगा, because a तो हमने 1 लिया है तो ab कितना हो जाएगा, b. So therefore mu of ab कितना हो जाएगा, mu of ab will be what, ab तो b की equal है. So this is mu of b. So this is what, mu of b into 1. So you see mu of b into mu of 1. So this is what, mu of b into mu of a. Which is same as, because these are numbers, so mu of a into mu of b. So mu of ab किसके equal आ गया? Is it fine बच्चे? Yes, ma'am. Right. So similarly the other case will follow. Right. So similarly, I'm sorry. So similarly, if a is not equal to 1 and b is equal to 1 will follow. So what is the next case? So let a and b दोनों ही 1 के not equal. अब further, if square of any number divides, ये भी तो हो सकता है कि square of any prime divides a और square of any prime divides b. बेटा ये हो सकता है. अब हमने क्या लिया, दोनों a और b 1 के इक्वल नहीं है. और दूसरा अब क्या हो सकता है कि p square a को डिवाइड करे या p square b को डिवाइड करे. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर p square दोनों में से किसी एक को भी डिवाइड करेगा, p square प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा. Yes or no? Yes, ma'am. Right. So suppose कर लेते हैं, say p square divides a and p square does not divide b. किसी एक को डिवाइड करता है वो, तो इसका मतलब p square divide a, तो therefore mu of a कितना हो जाएगा? What will be mu of a? 0. 0. Very good. So therefore mu of a into mu of b कितना हो जाएगा? mu of a तो 0 है, तो mu of a 0 हो जाएगा. Yes. And what about mu of ab? What about mu of ab? You see p square also divides ab, तो mu of ab भी कितना हो जाएगा? 0. यहाँ से आ गया mu of ab is equal to mu of a into mu of b. हो गया बच्चे? Yes, ma'am. तो ये हमने केस क्या लिया था कि p स्क्वायर या तो a को डिवाइड करता है या b को डिवाइड करता है, किसी एक को डिवाइड करता है. Now let us assume
एनी पी स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स ए एंड पी स्क्वायर बी को भी डिवाइड नहीं करता. यही केस बचा फिर अब तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी प्राइम का स्क्वायर ना तो ए को डिवाइड करता है ना तो बी को डिवाइड करता है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ A will be some primes, so P1 R1 P2 R2 so on up to PS RS and B, oh sorry, not R1 R2 RS, please I'm sorry. So A को कोई भी स्क्वायर डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब A की प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने प्राइम्स हैं सबकी पावर 1 है एंड B में भी जितने प्राइम्स हैं सबकी पावर 1 है. बेटा इज इट फाइन, बिकॉज हमने ये अज्यूम किया है कि ना तो A को कोई स्क्वायर डिवाइड करता है ना B को कोई स्क्वायर डिवाइड करता है. बेटा इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो therefore AB कितना हो जाएगा, AB कितना हो जाएगा, AB will be P1 P2 so on up to PR Q1 Q2 so on up to QS. अब मुझे बताओ AB में कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं AB में, कितने कितने प्राइम नंबर्स आ गए AB में, हाउ मेनी प्राइम, P1 P2 PR R ये हो गए Q1 Q2 QS R plus S. R plus S. So therefore mu of AB कितना हो जाएगा, R plus S. Oh, sorry, not R plus S. I'm sorry. Mu of AB will be 1 minus 1 raised. minus 1 raised to power R plus S. So you see, इसको हम लिख सकते हैं minus 1 raised to power R into minus 1 raised to power S. But ये देखो बेटा, P में A में कितने एलिमेंट्स थे, A में कितने एलिमेंट्स थे, A में थे R एलिमेंट्स, P1 P2 PR. So you see, minus 1 to the power R is nothing but mu of A. And similarly, B में कितने एलिमेंट्स थे, Q1 Q2 QS. Right? So ये क्या बन गया, mu of. So in any case, mu of AB is equal to mu of A into mu of B. So therefore, the function mu is a multiplicative function. But is it clear, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Those who have joined late, we have just started with the Mobius function. So Mobius function is what? This is a function जिसकी value 1 होती है अगर मेरा number 1 होता है, and then अगर p square मेरे किसी number को divide करता है, so if p square divides any number n, so p is prime, so mu of n will be 0. And further, अगर n is p1 p2 product of distinct primes, then mu of n is equal to minus 1. कितने प्राइम्स है इसमें, इसमें r प्राइम्स है, right? And just now we have shown that this function, Mobius function mu, is a multiplicative function. कि अगर कोई दो numbers हैं जिनका GCD 1 है, then in that case mu of AB is equal to mu of A into mu of B, right? Okay. So now the next lemma, if you see, it has come in GND also. So I mean, this is E. Merton's lemma. So just ऐसे questions भी करेंगे. So in इस chapter में इस तरह questions भी हैं. So we just have to apply the definition. So what does lemma say? So for each positive integer n greater than or equal to 1, so what we have to prove? Summation d divides n, mu of d. So mu of d is equal to 1 if n is equal to 1 and 0 if n is greater than 1. तो हमें ये प्रूव करना है कि summation d divides n, इस रिजल्ट को हम बहुत यूज करेंगे in the next exercise. So summation d divides n, mu of d is 1 if n is equal to 1 and 0 if n is greater than 1, right? So proof wise, you see, let us name left hand side some function. Let us name left hand side. So left hand side is what? Summation d divides n mu d. Let me call this as capital F of n. So this is some function of n,
राइट तो जैसे जैसे n चेंज होगा उसके डिवाइजर्स चेंज होंगे, आंसर चेंज होगा। अब देखो हमें इस फंक्शन को दो जगह जज करना है, n इज इक्वल टू 1 पे और n ग्रेटर देन 1 पे, राइट। सो लेट अस टेक फर्स्ट केस, इफ n इज इक्वल टू 1, इफ n इज इक्वल टू 1 तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, दिस इज समेशन d डिवाइड्स 1 म्यू ऑफ 1। बेटा मुझे एक बात बताओ, सॉरी म्यू ऑफ d, 1 के डिवाइजर्स कौन से होते हैं? 1 itself. वन इटसेल्फ। सो हमें क्या करना है, हमें सम लेना है d के ऊपर। d क्या है, वो नंबर्स जो 1 को डिवाइड करते हैं, बट 1 को तो एक ही नंबर डिवाइड करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, बस म्यू ऑफ 1। और म्यू ऑफ 1 हमें पता है कितना होता है, 1. 1। सो यू सी अगर n 1 था, इफ n इज 1 वी गेट दिस, इफ n इज 1 आंसर इज 1। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Right, now let n be greater than 1. Okay, let n be greater than 1. Okay, so say n is equal to, अब हमें पता है जब भी कोई नंबर 1 से बड़ा होता है उसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं, p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 pk अल्फा k। तो हमें क्या चाहिए, तो f ऑफ n कितना हो जाएगा, सो f ऑफ n इज व्हाट, f ऑफ p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 pk अल्फा k। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट एक्सरसाइज में एक आर्टिकल किया था कि अगर हमारे पास कैपिटल f ऑफ n is some function in terms of small f of small f, and if f is multiplicative, याद है, then capital F is also multiplicative। ये हमने आर्टिकल प्रूफ किया था। So अगर capital F of n is some function in terms of small f, so if capital F is some function, and if this right hand side is multiplicative, then the left hand side is also multiplicative। अगर small f multiplicative है तो capital F भी multiplicative होगा। अगर अब यहाँ पे देखो हमने capital F क्या लिया है, हमने कैपिटल F क्या लिया था, कैपिटल F हमने लिया है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ म्यू। अब बेटा अभी हमने प्रूफ किया है म्यू फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव होता है, Yes, ma'am. Yes, अभी ma'am. हमने प्रूफ किया है म्यू फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव हुआ है, इसका मतलब कैपिटल F फंक्शन भी क्या हो जाएगा, Multiplicative. multiplicative, right? So let me call this result as star. Now since mu is multiplicative function, so since mu is multiplicative function, therefore from star capital F is multiplicative, so इसका मतलब आप कैपिटल F को ब्रेक कर सकते हो, तो देखो कैपिटल F ऑफ n कितना हो गया, देखो f ऑफ n क्या था, p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 सो ऑन अप टू pk अल्फा k, pi सारे प्राइम्स हैं, इनका gcd आपस में 1 होगा, तो यू सी हम इसको क्या बोल सकते हैं, f ऑफ p1 अल्फा 1 f ऑफ p2 अल्फा 2 f ऑफ pk अल्फा k। बेटा इज इट फाइन, बेटा यहाँ Yes, पे क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. that's it, we are almost done. अब अगर आप देखो, let us find one of them. Now f of p1 alpha 1 by definition अभी आपने लिखा था क्या था, f क्या था, summation d divides n mu of d। f of n क्या था, f of n was summation d divides n mu of d। तो देखो बेटा अब यहाँ पे आपका d, अब आपका n क्या है, यहाँ पे n क्या है, p1 अल्फा 1, हम p1 अल्फा 1 के लिए निकाल रहे हैं। यस बच्चे, फाइन, ऑल ऑफ यू। अब मुझे एक बात Yes, बताओ, ma'am. p1 अल्फा 1 को कौन से नंबर्स डिवाइड करेंगे, कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो p1 अल्फा 1 किसी प्राइम p1 अल्फा 1 को डिवाइड करेंगे?
P1 So you see, P1 2 से P1 पहले- P1 से पहले 1. 1 is a number which divides Yes, every ma'am. number. So you see, mu of 1, हमें सम लेना है डिवाइजर्स पे P1 alpha 1 के. So you see, first divisor of P1 alpha 1 is 1. Then second divisor is P1 alpha 1 P1. Then P1 square. Then P1 cube. एंड सो ऑन. लास्ट में क्या आ जाएगा? मैक्सिमम पावर जो उसको डिवाइड करेगी क्या आ जाएगी? P1 अल्फा 1. बेटा ये स्टेप क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Right? So that's it. If you're done, if you're fine. So you see, what is mu of 1? What is mu of 1? 1 1. One. What is mu of P1? -1 raised to power P1. माइनस ना ना नॉट P1. कितने प्राइम्स हैं इसमें? इसमें एक ही प्राइम है, तो -1 to the power 1. जितने प्राइम्स हैं, नॉट P1, -1 to the power 1. जितने प्राइम्स हैं इसमें, so इसमें एक ही प्राइम है. What about mu of P1 square? -1 raised to power 2. नहीं, 0 0. 0. क्योंकि देखो So 0. ना, इसको p स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, इसको प्राइम का स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, so this will be 0. Then what will be mu of P1 cube? -1 0 नहीं, हाँ देखो ना, P1 क्यूब को भी P1 स्क्वायर डिवाइड करेगा. जहां पे पावर 2 से बड़ी हो गई वहां पे हमेशा 2 डिवाइड करेगी पावर. सो 0, रेस्ट ऑल विल बी 0. बेटा क्लियर है सबको? Yes, ma'am. बिकॉज P1 स्क्वायर आगे वाले सारे नंबर्स को डिवाइड करेगा. So you see what this will become. So you see this is what? 1, rest all is 0. So this is what? 1 minus 1. So 1 minus 1 is also 0. So you see what is f of P1 alpha 1? 0. तो अगर मैं इस रिजल्ट को यूज करूं, इस रिजल्ट को अगर मैं यूज करूं तो what will be f of n? 0 0. तो ये हमने कौन सा केस लिया था? Where हमने क्या लिया था? n was greater than 1. Is it clear? So if n is greater than 1, तो f of n क्या था? f of n was summation d divides n mu d. So summation d divides n mu d is equal to 0 where n is greater than 1. Is it clear बच्चे? Any doubt to anybody? No, ma'am. Right? No, ma'am. So this was E. Merton's lemma. Okay, and there is one small corollary. Let us do this. Okay. So what this corollary says that summation d divides n mu d. अभी हमने prove किया था summation d divides n. So this why I'm saying again and again because we'll be using in the next exercise. So summation d divides n mu d. तो अभी हमने prove किया था is 1 if n is equal to 1 and 0 if n is greater than 1. अब ये कह रहा है कि इसको आप ये भी मान सकते हो. You see what is this? This is integral part of 1 by n. और हमें पता है integral part of 1 by n. अगर तो n 1 हुआ, if n is 1, तो ये क्या बन जाएगा? 1 by 1. 1 by 1 is 1. And what is integral part of 1? 1. Integral part of 1 is 1, बच्चे? Yes. Yes, ma'am. And what about if n is greater than 1? So you see, n is greater than 1. तो ये देखो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से बड़ा हो गया. तो जब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 0 point something आएगा आंसर. तो इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा? 0. When n is greater than 1. So you see, when n is greater than 1, this is 0. When n is equal to 1, this is 1. तो ये देखो ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों सेम है. ये भी यही था, summation d divides n mu d भी यही था, 1 if n is 1 and 0 if n is greater than 1. और ये फंक्शन भी यही था, 1 by n if n is 1 and 0 if n is greater than 1. तो इसका मतलब ये दोनों फंक्शंस आपस में इक्वल है. Right? So this was just a small corollary. Otherwise, we will not be making much use of it. बेटा क्लियर है? Yes, ma'am. राइट. सो अगर एक बार एक आधा क्वेश्चन अगर हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस में करवाऊंगी, बट आई जस्ट वांट कि पहले थ्योरी खत्म कर लेते हैं सो दैट एक यू सी वैसे में एक एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल. तो क्वेश्चन सारे बस डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसमें. ओनली थिंग इज बिट थोड़ा सा हमें लॉजिकल होना पड़ेगा. ये देखो, इवैल्यूएट j from 1 to infinity mu of j factorial.
तो देखो, so this is what summation j is from 1 to infinity mu of j factorial. That's it. Let us put the value. So starting कहाँ से हो रही है? So mu of 1 factorial plus mu of 2 factorial plus mu of 3 factorial plus ये factorial है साथ में mu of 4 factorial plus mu of 5 factorial and so on. अब देखो what is mu of 1 factorial का मतलब कितना हुआ 1, so this is mu of 1. Then 2 factorial का मतलब कितना हुआ 2, so this is mu of 2. 3 factorial कितना होता है बेटा? So 3 into 2 लिख लेते हैं. 6. अब अगर आप देखो mu of 4 factorial 4 फैक्टोरियल में 2 स्क्वायर आएगा. 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 4 3 2 1. तो ये देखो ये 4 को 2 स्क्वायर डिवाइड करेगा. यस और नो? Yes, ma'am. Yes or no? Right? So what I want to say is, yeah. So what I want to say from here is, now 2 square divide 4 factorial. And similarly अगर आप देखो अब जो 5 factorial होगा वो क्या होगा? 5 into 4 factorial. तो इसका मतलब 2 square 5 factorial को भी डिवाइड करेगा. बेटा yes or no? Yes. And similarly आगे जितने भी नंबर्स होंगे उन सबको 2 स्क्वायर क्या करेगा? डिवाइड करेगा. तो इसका मतलब इनका म्यू एन कितना हो जाएगा? इनका सबका म्यू एन कितना हो जाएगा? 0. 0. All the numbers answer will be 0. So that's it. So you see mu of 1 कितना होता है? Mu of 1 is 1, right? Mu of 2 कितना होता है? What will be mu of 2? -1. एक ही प्राइम है -1. Mu of 3 into 2 कितना हो जाएगा? कितने प्राइम्स हैं इसमें? 2. 2. So you see this is what? 1 -1 and this is -1 का square. So -1 का square कितना हो गया? +1. So 1 1 will cancel. So answer is 1. Beta, is it clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Right. So you see this question, next question is coming GNDU. So okay, let me move further to next exercise. We'll come back to questions. So you tomorrow there'll be no class. So you can please start solving these examples, exercise questions, and some of the typical examples I'll do for you. So just I want to do one more article of the next exercise. So we'll come back to all these questions. So all these are just based on the definitions. Okay. Now this is very important from examination point of view. Mobius inversion formula. So कई बार directly आ जाता है state and prove Mobius inversion formula, right? So what this formula says कि अगर मेरा small f की help से मुझे capital F मिल रहा है, so you see if capital and F and small f are two number theoretic functions, so number theoretic function means वही arithmetic functions जो हम कर रहे हैं. So if they are related by this relationship, if capital F of n is what? Summation d divides n fd, then the Mobius inversion formula gives us a way by which we can find small f using capital F. So हमें क्या पता है? हमें small f की help से capital F लिखना आता है. So Mobius function क्या बोलता है कि आप small f की help से you can write capital F also. So what this the formula is? So this is nothing but summation mu d, right? And capital F of n by d, where d is what? D is all those numbers which divides n. Beta clear hai? Is the statement clear?
Yes, ma'am. right? Yes. Okay, so proof wise I'll do it here from here only. So proof is very easy, but थोड़ा सा बीच में आपको confusion लगेगी. In case the class gets cancelled off, time खत्म हो गया, तो we'll continue day after tomorrow with the proof wherever we'll be left. Okay, so let us start. So let us take the right hand side. Let us take. I'm going very slowly. कोई doubt हो तो मेरे से please stop me there only. Let us start with the right hand side. Right hand side क्या है? Summation d divides n mu d into f of n by d. अब हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में कैपिटल एफ की वैल्यू डाल दी. कैपिटल एफ क्या है? कैपिटल एफ इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल एफ. सो यू सी दिस इज समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू डी. अब देखो कैपिटल एफ क्या है? दिस इज समेशन. ऑलरेडी कैपिटल एफ में एन बाय डी आ रहा है, तो लेट अस नॉट राइट. सो कैपिटल एफ बेसिकली क्या है? समेशन, वो सारे नंबर्स जो एन को डिवाइड करते हैं उनका समेशन एफ ऑफ, राइट. सो हेयर लेट मी राइट के, वेयर के इज व्हाट? के वो सारे नंबर्स हैं जो एन को डिवाइड करते हैं, और इस केस में मेरा एन नहीं है, इस केस में मेरा एन क्या है? एन बाय डी. बेटा इज इट क्लियर? बेटा क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. This is this, right? So now रिपीट करना दोबारा बोल रही हूँ. हमने राइट हैंड साइड लिया, समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू डी इंटू एफ ऑफ एन बाई डी, इसको हमने उठाया. अब देखो राइट हैंड साइड में कैपिटल एफ आ रहा है. कैपिटल एफ क्या है? कैपिटल एफ ऑफ एनी नंबर इज व्हाट? समेशन डी डिवाइड्स एन, वो नंबर समेशन डी डिवाइड्स द नंबर म्यू ऑफ डी. अब यहाँ पे मेरे पास एफ एन की बजाय एन बाई डी है, तो मैं डी नहीं लिखूंगी बिकॉज डी ऑलरेडी मेरे पास क्वेश्चन में है. तो ये क्या हो गया? समेशन कोई के जो इस नंबर को डिवाइड करता है, म्यू ऑफ के. इज इट फाइन? म्यू की जगह एफ है मेरे पास यहाँ पे, एफ ऑफ के. बेटा क्लियर है? स्मॉल एफ ऑफ के. इज इट फाइन? यस मैम. Okay, so you see now, you see, so हमारे पास क्या था? हमने क्या लिखा था? Summation d divides n, right? And we had summation, we had k divides n by d, right? Mu of d. And so you see हमने सारी समेशंस को बाहर ले गए हम. So mu of d, और यहाँ पे मेरे पास क्या था? f of k. यही था ना बेटा? हमने समेशंस को एक साइड लिख दिया, फंक्शंस को एक साइड कर लिया. बेटा इज इट फाइन? Yes, ma'am. And further if you see k divides nd, so k divides nd, तो इसका मतलब क्या हुआ? nd को मैं लिख सकती हूँ, so n upon d is what? k into some integer. तो अगर मैं अब यहाँ से देखो n is what? So अगर मैं d को उधर भेज दूँ dk into e, तो यहाँ से एक चीज और फॉलो होती है कि dk, n is dk into e, so it means dk also divides n. Is it fine? So this just for simplification, ताकि बार बार k divides nd ना लिखना पड़े. आपकी बुक में वो लिख रहा है dk divides n, so nothing else. You can write k divides nd also, no problem with that. Is it fine बच्चे? Any doubt till here? No, ma'am. Right, so now what we will do, so if you see, so this is what? So this is what? So if I'm continuing from this equation, so this is what? So this is equal to, now summation so summation mu d, right? So where d is what? D is some dk divides n, right? And I want, so this is f of k, and k is what? So I can say from here also. So you see again, if you see, n is what? N is dk e. So you see n is equal to k into some integer. So from here one thing again follows, k also divides n. So we can write this as k divides n. Why we have written this? You will see why. You will see what is the use of this. But is it fine? Is it clear? Yes, ma'am. अब देखो k divides n, अब k divides n, तो अब n के डिवाइसेस कौन से हो सकते हैं? One possibility is that k is equal to n. अब देखो किसी भी नंबर के डिवाइसेस कौन से होते हैं? वो या तो इसके इक्वल होते हैं या उससे छोटे होते हैं. तो हमने क्या किया? इस समेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया. k divides n, right? And this I can write as again, right? d divides again
हमने इसको नीचे भेज दिया, k को हमने नीचे भेज दिया, mu d into f of k, right, plus I'm writing the same term again, k divides n, d divides n by k, mu d into f of k. So here what I am taking, this first term is the case when k is equal to n, and this term is the case when k is less than n. Girls, यहाँ तक clear है? हमने देखो k was what? k was the number जो n को divide कर रहा था. अब मुझे पता है जो नंबर n को divide करते हैं, अब 3 को कौन से numbers divide करते हैं? 1 and 3 itself. 10 को कौन से number divide करते हैं? 1, 2, 5, 10. तो you see, या तो डिवाइजर नंबर के इक्वल होगा या वो नंबर से छोटा होगा, और तो कोई केस नहीं बनता. गर्ल्स यस? Yes, ma'am. तो हमने क्या किया, इस समेशन को, ये जो हमारे पास समेशन थी, ये जो समेशन थी, इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया था. सो k डिवाइड्स n, सो वी हैड टू पार्ट्स. वन पार्ट इज k इज इक्वल टू n and one part is what? k is less than n. तो यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा, यही टर्म दो बार लिखी है. एक बार k को इक्वल टू n लिया है, एक बार k को लेस देन n लिया है. यहाँ तक किसी को डाउट बच्चे? No, ma'am. Okay, so what I'll do, I'll stop here because otherwise the time will be over. So बीच में ही proof रह जाएगा. तो यहाँ तक please एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना. We'll continue from here on Friday. Is it fine, बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So meantime, please start solving your examples. Once this theory is over, I'll come to the exercise questions. Right? Thank you, beta. Thank you, beta. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, बच्चे.